Hello students, today we are having our day 10 video 6 and for class 12. Today we are going to start our second chapter, that is sexual reproduction in angiosperms. What is the meaning of angiosperms? Angiosperms means these are flowering plants which are able to produce their sex organs, either male or female sex organs present in a single flower or they are present separately. Fine. So today I will introduce you this chapter. Later on we will go through all the things which are more important in this chapter. So first of all, every single flowering plant is meant to perform sexual reproduction. Fine. Diversification. I have written a word diversification. Various kinds of plants which are found in our surroundings. Every kind of flowering plant, they are having certain different adaptations to produce their respective reproductive structures. We have result of reproductive structures, or we can say product of fertilization. As a result, they will form their fruit as well as their seeds. They are having different adaptations to produce fruit and seeds. So in this chapter, we will study about the morphology, anatomy and process of sexual reproduction in flowering plants. What is the meaning of this morphology? Morphology is that branch of science, branch of biology which deals with the external structures, external or physical features which are visible from the outside. Second is the anatomy. In case of anatomy, it's a branch of biology which deals with the internal structure of any living organism. Internal structure of any living organism, either plant or animal. Next, the process of sexual reproduction. In this, under the process of sexual reproduction, we will study about the structures which are meant for the formation of gametes, how they are forming their gametes, which kind of cell division is involved, which ploidy is present in every gametic structure or in the plant body, or about meiocytes that we have studied in our previous chapter. Fine. So flowers. So here we are having the flowers. In case of flower, we will study about the bisexual as well as unisexual flowers. Unisexual flowers are those in which the male or the female sexual organs are present in separate flowers. But what is bisexual? In which male and female sex organs are present in a single flower. So flower here act as symbol of conveying human feelings. Generally हम इन्हें अपनी feelings को कोई भी मैसेज कन्वे करने के लिए फ्लावर्स को हम यूज करते हैं. ठीक है, तो फ्लावर्स क्या है? दे आर फॉर अ बायोलॉजिस्ट. जो बायोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो बायोलॉजी या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं. तो फॉर बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये ऐसी मॉडिफाइड शूट होती है किसी भी प्लांट बॉडी की जहां पर होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो फ्लावर एक ऑर्गन है जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिस्पेक्टिव फ्रूट एंड देयर सीड्स. जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ऐसे ही कुछ आगे हम इसमें चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा था. देयर आर मेनली 3 इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. One is the pre-fertilization event, second fertilization event, and the third one is post-fertilization event. In case of pre-fertilization event, what we studied? The gamete formation and gamete transfer. For gamete transfer, in case of plants, we follow pollination. In case of fertilization, in angiosperms, special kind of fertilization occur, which we call double fertilization. Last is the post-fertilization events. Post-fertilization events, after the formation of zygote, what are the changes we can observe in zygote undergoing mitotic divisions? What are the different shapes of embryo and how fruit formation or seed formation occur? About all these things we will study in our next video. So let's revise it once again. In this chapter, you are going to study the sexual reproduction in angiosperms. And angiosperms are what? These are the flowering plants which act as a साइट. जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके पास एक ऑर्गन है फ्लावर विच एक्ट एज अ साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ फ्लावर, देयर मॉर्फोलॉजी, देयर इंटरनल स्ट्रक्चर and every function of their every component
and all the processes that are involved in sexual reproduction, how they are forming their pollen grains, how they are going to form their respective female egg cell, how are they doing fertilization. A separate kind, different kind of fertilization occur in case of angiosperms, like a double fertilization, and how they are forming later endospermic. जो भी बहुत से नए नए टिश्यूज के नाम मैं आपको बोल रही हूँ, ये सब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बारी बारी. मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, वो कैसे अपने रिस्पेक्टिव गैमीट्स की फॉर्मेशन करते हैं, फिर गैमीट को कैसे ट्रांसफर करते हैं, फिर गैमीट ट्रांसफर करने के बाद इतने तरह तरह के डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, वो अपने गैमेट ट्रांसफर करने के लिए कौन कौन से स्पेशल अडेप्टेशंस को यूज़ करते हैं. बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है आपको इस चैप्टर में. इट्स अ वेरी मच इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें कुछ इसके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं आजकल एग्जाम में, और नीट में भी आते हैं. तो हम उन तरह के सारे एग्जाम्पल्स एज वेल एज न्यूमेरिकल्स को भी साथ साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे. अगर किसी को कोई भी जगह पर इश्यू आता है, दे कैन कमेंट मी डायरेक्टली. ओके, थैंक यू फॉर टुडे.